Okay. So projectile motion on inclined plane, very important. यही people को थोड़ा hard लगेगा, but easy one. Projectile motion on inclined plane. कुछ नहीं, inclined plane मालूम है, this is called inclined plane, certain angle theta. Okay, either say I am throwing the projectile motion like this, जाएगा ना, this is called inclined projectile motion. Okay, now here we have two types of approaches. One is नीचे से ऊपर फेंको, other one is I am throwing from upwards से downwards. Two things are there. Okay, इसको अल्फा मानेंगे, इसका also अल्फा. Okay, down to top approach, top to down approach. These two अलग अलग में कहानी देखने वाला है. We have to see in these two things. Okay, so first one we'll go for the down to top approach. Down to top मतलब inclined plane, bottom से I'm throwing upwards. Okay, इसका diagram वगैरह रन करेंगे. How to tackle this type of questions we'll see. चलो, so this is the inclined plane. थीटा इंक्लाइन, देखो इंक्लाइन का ऑलवेज थीटा याद रखो. आई एम थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट डाउन टू टॉप राइट, बॉटम से आई एम थ्रोइंग अपवर्ड्स. ओके, आई एम थ्रोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी यू. इसका एंगल इज अल्फा. तो जाएगा 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 जाएगा, इधर हिट करेगा राइट. नाउ व्हाट आई एम टेकिंग इज विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग, उस डायरेक्शन में I am taking as x-axis. This is x-axis. Why? Because object is going in this direction, right? उसी direction में I am taking positive x-axis. Okay. And उसका corresponding y-axis is this one. This is y-axis. Condition क्या है? दोनों should be perpendicular. X and y should be perpendicular. Now here alpha plus theta should be 9. Alpha plus theta plus that other angle should be 90. Yes. Okay. नाउ देखो इसका क्या चलेगा, कहानी देखो. नाउ इसका कंपोनेंट्स निकालो. व्हाट उसमें नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नाउ हियर आई एम टेकिंग द कंपोनेंट्स ऑफ यू. यू का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्शन में. ओके, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी यू साइन अल्फा. Okay, now coming to G. G का क्या है देखो, G का is acting downwards right. G का is acting downwards. This is 90. Okay, I am drawing perpendicular वाला. I want to find G का भी components. I want the components along x direction, y direction only. This is not in x direction, y direction. Okay, I want the components along. So this one I am taking along y direction. देखो y direction को नीचे ले रहा हूँ. Okay, now this is theta. This is 90. This will be 90 minus theta. And this is perpendicular, right? This will be how much then? This will be how much? Theta. Now if I know the components, now देखो G का इस तरफ component will be G cos theta. And इसका perpendicular component is G sin theta. Now if you see carefully that, now tell me horizontal acceleration is how much. देखो G sin theta. Now इसमें जीरो नहीं है, here no zero. अभी तक oblique projectile motion, horizontal projectile motion में, horizontal में there is acceleration is zero, but here देखो acceleration due to gravity is acting here in the direction opposite direction that of positive x-axis. Okay, there is only difference in the inclined plane में. Now what I'll do is इसको मैं सीधा बनाऊंगा so that आपको easy हो जाएगा कहानी में. So what is that? X positive x-axis like this. This y-axis. I am throwing this object right. U. This is alpha. गया इसमें. Now here क्या क्या है? Negative y direction में क्या था? Negative y direction में you have G cos theta. And negative x में you have G sin theta. And here U cos alpha, U sin alpha. खत्म.
If you know this diagram, now you can solve anything. Matlab, if I take the x and y direction, what are the things, you know, whenever you're calculating the things, x direction mein initial velocity is u cos alpha, and y direction mein u is alpha, right? All are alpha. This is alpha. Only g will be with respect to theta. Inclined ka angle theta, right? G will be always with respect to theta, and remaining will be alpha. Okay. So y में क्या है? U sin alpha. And ax, can you tell me? Anybody? Ax is how much? According to question. Ax. Acceleration in x direction is देखो opposite direction to that of x axis, right? So it is minus g sin theta. And ay is देखो downwards. Ay is minus g cos theta. Okay. So ये यूज करना पड़ेगा फॉर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए. Okay, so this is down to top approach. Down to top approach में क्या फर्क है? एक horizontal में one more acceleration is getting added, that is called g sin theta. G sin theta. So Right? this is for all inclined plane predictions, right? All inclined plane means only from down to top approach. This one. Oh, Okay, down to top approach. Okay, this one. Down to. In this way, we are trying to find time of flight, maximum height, range. In this way. Okay. Okay. Chalo. Now first one is time of flight. Chalo. Time of flight में we'll take y direction, x direction. Hold on for a second. Okay, yeah, done. Time of flight में we will take y direction, x direction. Why? Use करो. What are things you know y direction में use करके and solve करो. This is alpha. This is g sin theta. This is g cos theta. And this is u cos theta. U sin theta. And take y direction, what are things you know, and apply equation of motion and find time of flight. Use करो. Y direction में. Okay. Tell me. U y minus g cos theta. Next, y direction initial velocity. Okay, sorry. Initial velocity uy is how much? U sin theta, sin alpha, right? This is alpha. Okay, and ay is minus g cos theta. If you know this diagram, you can solve anything. Okay. Now, can you tell me what is sy? Displacement in y direction when the object is going from here to here. Sy is how much? Displacement y direction. When the object went from here to here, only x में displacement हुआ, y में कुछ नहीं हुआ. Y में displacement is 0. Now time of flight is t. Apply equation of motion and try to find time. Time of flight find करो. listen. Inclined plane को we converted into normal projectile motion only, but only difference is g sin theta is acting in the opposite direction. Well, I'm getting Hmm. minus no u sin alpha 2u sin alpha by g sin theta. Yes. 2u sin alpha by g cos theta. Oh yeah, my bad. देखो नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin theta by g, right? Since y डायरेक्शन में कौन सा g है? g cos theta. देखो g cos theta. Same only. 2u sin theta by g, right? g y डायरेक्शन में क्या है? g cos theta, g cos theta कर रहा है. And alpha is the angle we have to take always.
G के साथ always theta will be there, inclined वाला theta. So difference कम समझो. Don't take alpha इधर. Alpha कौन सा है? वो inclined में से जो भी throw करे, that is one. And theta is the inclined angle always, inclined वाला angle. Okay. Now same way, try to find maximum height. Maximum height also we are taking the y direction, right? Now take equation of motion. So solve. Uy is u sine alpha. Ay is minus g cos theta. And we want to find maximum height. Vy is how much maximum height में? Maximum velocity at vertical height में is 0. Okay. Now solve. Sy is equal to h. H find करो. Without time equation you can use, right? Use करो. B square is equal to u square plus 2s. And tell me the answer. सेम, मतलब हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टर मोशन में क्या किया वही कर रहे हैं सेम, बट ओनली डिफरेंस क्या है, ए वाई ए एक्स ऐड हो जाएगा. ए वाई जी था, इधर जी माइनस जी कॉस थीटा था. हाँ प्ले. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as. वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन. Sure, won't Sy be minus h? Sy is minus h. Why? We are trying to find maximum height, right? Displacement maximum height is what from here to here, right? Sir, I got u square sine square alpha divided by 2g cos theta. Yes. U square sin square alpha by 2g cos theta. देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, u square sin square theta by 2g. इधर y डायरेक्शन में क्या है, g cos theta. दैट्स व्हाई g cos theta आएगा, राइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज. रेंज कैसा है, रेंज का फॉर्मूला नो नीड ऑफ बैटिंग, ओनली मेथड समझो. रेंज का मतलब द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज नथिंग बट रेंज, राइट. सो रेंज फाइंड करो. सो रेंज के लिए विल टेक एक्स डायरेक्शन, राइट. टेल मी व्हाट आर थिंग्स यू नो इन एक्स डायरेक्शन में. ux is how much, u cos alpha. Next ax is how much, Minus g sin theta. minus g sin theta. And sx is nothing but range we have to find. And time of t is nothing but time of flight. In this time of flight only we should find the range, right? So time of flight का फॉर्मूला क्या है, 2u sin alpha by g cos theta. Now use the equation of motion s equal to ut plus half at square. So y direction, y direction, y direction. Now if I substitute the value, if I substitute the value, final result I'm writing, just मतलब method समझो, that's it, no need of formula. Okay, final result I will write s equal r equal to, देखो मतलब all are given, right, r के जगह में. So from this r is equal to, if we take common वगैरह किया तो you will get as u square by g cos square theta, बहुत बड़ा है समथिंग आएगा बट no need of बैटिंग, into sin 2 alpha plus theta minus sin theta.
This is the range formula in the down to top approach. But no need of batting. We have to bat till here tak only. Okay, we'll substitute and we'll get the answer. Okay. So this is range in x direction, right? What? This is range in x direction, right? X direction. Okay. Here no need of batting. But either kaun sa bat karne ka I will tell you. So only time of flight, maximum height only we should by hat. Range ka no need of batting. This is the final answer. U square by G cos square theta. Okay. Here, you tell me R max find करने के लिए. The sin value should be more, right? Sin value should be maximum. What is the maximum value of sin theta? 1. 1. So R max आने के लिए मैं क्या करूँगा? Sin 2 alpha plus theta is equal to 1. 1 को I can write as sin pi by 2. Sin 90, right? So sin से cancel. So 2 alpha plus theta is equal to pi by 2. So therefore alpha is equal to how much? Alpha is equal to ठीक है 2 alpha is equal to pi by 2 minus theta. So alpha is equal to pi by 4 minus theta by 2. ये learn करना पड़ेगा. At this angle में range is maximum. At this angle में range is maximum. ये ऐड करना पड़ेगा pi by 4 minus theta by 2. Already mains में भी आया था ये वाला. So learn करो. Alpha is pi by 4 minus theta by 2. And now if I substitute the value R max, if I substitute alpha in this equation, after solving R max ka, so U square by G into 1 plus sin theta. This is the answer. देखो नॉर्मल मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है? यूज कर बाय G, राइट? ए इसमें इनटू 1 प्लस sin theta आएगा. ये वाला याद रखो, ये दोनों याद रखो. ओके सो एक बार बैठ करो लास्ट. टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज का तो मेथड लर्न करो. बट आर मैक्स का फॉर्मूला तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 एंड यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस sin theta. वेरी इंपॉर्टेंट. So now in the question, how will we know if the angle specifying is alpha or theta? Alpha, I told right, main diagram में alpha क्या है? Question मतलब they will tell inclined angle with respect to horizontal is always theta only we should take. They'll mention clarity inclined वाला. And when you throw a certain angle this is alpha always. Yeah. Okay, चलो. Now questions करेंगे. ये फॉर्मूला बैठ करो. I'll ask time of flight, maximum height, alpha value, R max का वैल्यू बैठ करो. आगे तो बोलो इलाज. रेंज का तो मेथड ओनली एक्स डायरेक्शन लेके सॉल्व करने का. ट्राई. टाइम ऑफ फ्लाइट मानो. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin alpha by g cos theta. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ना. U square sin alpha by 2g. No, u square sin U square. sin square alpha by 2g cos theta. ओके. एंड आपका रेंज का तो विच एंगल में रेंज इज मैक्सिमम? अल्फा. Then alpha equal to pi by 4 minus theta by 2. ओके मानो बोलो रेंज में आर मैक्स का फॉर्मूला. u square by g into 1 plus sin theta. यस. तो ट्राई करो. चलो इसका फॉर्मूला से रोट 1 प्लस में बट ऑलरेडी यू नो राइट. चलो करो. The maximum range of a rifle bullet on a horizontal ground, मतलब हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला is 6 kilometers. What is the maximum range on the inclined? 30 degrees. So in range max, it's ux only, right? Range max is u only, not x नहीं है u. जो भी थ्रो कर रहे हैं ना that velocity only should put.
So they're telling us to find the U, or are they telling us to find another No, maximum range? maximum range is telling to find in incline में. Incline at angle 30 degrees. मतलब theta is 30. Normal projectile motion में maximum range you know already. So is it 4? U square by, yes, correct. U U square by G is square by equals to, G is equal to 6 kilometers. then we can substitute in the big Yes. equation. No, R max का formula you know, right? U square by G into 1 plus sin theta. Theta is 30. U square by G के जगह में 0 लगाए तो आंसर is 4 kilometers. So relationship उसका इसका ऐसे combine करेगा. Okay? now करो. A bullet is fired with velocity this much from the bottom of the inclined plane at an angle 37 degrees with the inclined plane. 37 degrees with the inclined plane. मतलब which is alpha na theta na. Bullet is Theta. fired. Bullet is fired with an angle 37 degrees with the inclined plane. So theta is 37. थीटा वो दिया, वो तो समथिंग बीटा भी देगा, बट यू हैव टू मेन डायग्राम के हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा वेदर अल्फा ना थीटा ना बोल के. ओके एंड द So एंगल theta will be 30 and alpha will be 37. so he is telling he is firing the from the bullet से फायर कर रहा है with the 37 degrees with the inclined plane से 37 degrees है. And angle of incline they given with the horizontal say angle of inclination is 30 degrees. I'm not right to find the position of the maximum height of the bullet from the मतलब maximum height find करो use the formula and solve. So but the inclined plane does not make theta as 37. Theta as 37. See, they will tell theta, beta, anything. But in the main diagram, you have to decide which one is alpha or the. Dekho, understood, right? He's firing a 50 meters per second from the bottom of the incline. From the bottom, say he's throwing with 37 degrees with the inclined plane. Dekho, with the inclined plane. Inclined plane say. And here also he mentioned the angle of incline 30 degrees with the horizontal. With the horizontal, say angle of inclination is 30 degrees. No solve. Maximum height. In the question में theta is nothing but alpha only. If you get confusing, your question में आपको change करना पड़ेगा alpha alpha बोल के, so that you will not get confused. So sin alpha is 3 by 5, right? Sin 37, huh? Yeah, sin 37. Yes. So position of the maximum height means they're asking the maximum height, right? Maximum height only.
So over here, u is 50 or is u sine alpha 50? No, u is 50, right? Use 50. He's fired with velocity, right? He's throwing I'm with getting velocity. 30 root 3. Yes, correct. Yes, I mean, I got 30 root 3. Yeah, next one. Second one, time of flight. Is the second one 4 root 3? कितना? 4 root 2. 4 root 3 seconds. Yes, correct. The third one is asking range along the inclined plane. Normal range only. Method से करने का. So over here, it's better if we don't use the u square by g cos square theta sine 2 alpha, that one. नहीं वो सब नहीं है. मेथड यूज करने का, रेंज का. X डायरेक्शन में यूज करो. So can't we just write range is equal to u into t? See, u into t कब यूज करेगा? Only when the horizontal acceleration is 0. But horizontal acceleration इसमें है minus g sin eta, right? So that's why we have to use the equation of motion only. पूरा s equal to u plus half square. Yes, sir. Horizontally there is a g sin eta is there, minus g sin eta is there. So that's why ax is not 0. So इसमें ux into t नहीं आएगा. So I got 160 root 3 minus 144. 160 root 3 minus 144. So what is the formula? Tell me. 40 into 40, so 50 into. okay. So 50 into 4 by 5 into 4 root 3 plus half into minus 10 into 3 by 5 into 48. Yeah, ax what you use? Tell me. Oh my god, sir, I realized my mistake. Wait. Minus So I got R max as 500 by 3. R max is 500 by 3. Range कितना है? So range I got 160 root 3 minus 120. 160. 160 root 3 minus 120. Yes, correct. Yeah. Because g के साथ always theta रहेगा, not alpha. Yeah. Now he's telling to find the value of alpha at which range is maximum. That alpha value formula मालूम है ना? वो use करो. 5 by 4. Sorry. Cut What was that? By Alpha 4 by minus 4 plus theta by 2. alpha by 4. Alpha equal to. Oh, my bad. 5 by 4 minus theta by 2. So 45 minus 15. 30 degrees. Yes. Now range max spend करो. 500 root 3, yeah. 500.
500 √3 500/3 500/3 आएगा. 1 second, sir. Yeah, my bad. 500/3. Yes. Silly Okay, mistake. ये करो. JEE Mains क्वेश्चन करो, देखते हैं. I'll give options. Who will do? So, sir, in this question, alpha is 40 degrees. आंसर चाहिए मुझे. I want the. Sir, I'm getting 65. Okay, देखेंगे उनको भी बोला. A particle is projected from the bottom of the inclined plane of inclination 40 degrees. At what angle alpha from the horizontal should a particle be projected to get the things? So, I'm getting theta is 10. No. Oh my God, sir, I understood. Sir, I'm still getting 10. No, wrong. No option. JEE Mains question. देखो, a particle is projected from the bottom of an inclined plane of inclination 40 degrees. मतलब theta is 40. समझ रहे हैं? Theta is 40. Question understood? A particle is projected from the bottom of the inclined plane of inclination 40 degrees. तो उसका inclination theta मतलब this is 40 degrees. He throw like this. It'll go in But here. inclination, right? Angle from the horizontal becomes. Now he's asking what? At what angle alpha from the horizontal? मतलब he want this total horizontal. This angle is how much? मतलब if you can find alpha, then add करो, you will get total from the horizontal. From the horizontal से his angle is asking. Question understood? तो twisted question है. So at what angle alpha from the horizontal should a particle be projected to get the maximum range of the inclined plane? कितना angle from the horizontal से कितना angle में throw करूं so that you will get maximum range. मतलब alpha find करो at maximum range first. Find करो. Alpha का फॉर्मूला मालूम है? 5/4 minus theta by 2. So 45 minus 20, 25. 25. Oh, Now 40 with plus this 25. Oh, 6 पे answer. yeah. Okay. Very careful. See, they can give sometimes alpha के जगह में beta, gamma. Don't get confused. किधर है डायग्राम क्या पूछ रहे हैं थोड़ा वो पढ़ने के बाद डाउट आए तो गो फॉर नेक्स्ट लाइन आल्सो यू विल अंडरस्टैंड थीटा ना अल्फा ना बट स्टैंडर्ड डायग्राम के हिसाब से ओनली वी शुड कीप इन माइंड अल्फा थीटा इज ऑलवेज इंक्लाइंड वाला एंगल ओके So, angle of inclination is the theta. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हाँ विद ये इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन इज नथिंग बट थीटा Okay, sir. ओके चलो नाउ नेक्स्ट वन इज टॉप टू डाउन अप्रोच top to down approach last one okay so अभी तक क्या है bottom to top right तो top to bottom क्या difference है we'll see in this में
देखो, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज थीटा, ये थीटा इज फिक्स्ड and g will be coming with theta only. Okay, I am throwing with velocity u, तो जाएगा 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 नीचे गिरेगा, तंबेर इधर गिरेगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा आई एम कॉलिंग. नाउ विच डायरेक्शन आई एम थ्रोइंग, उस डायरेक्शन को आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. देयर आल्सो सेम थिंग, राइट? आई एम थ्रोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसी डायरेक्शन में आई एम टेकिंग एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नाउ हियर आई एम टेकिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, y axis is nothing but this one, right? This is a positive axis. Angle between them is 90. So yeah. Now same thing. Now take the components. इसका u cos alpha, ये वाला u sin alpha. Now g का if I take, same thing. This is 90 minus theta. This is theta. So g cos theta and g sin theta. Now इसका क्या डिफरेंस है? Down to top and top to down में what is the difference? If x and y if I take, आपको डिफरेंस समझ में आएगा. x डायरेक्शन में what is ux? u cos alpha and So uy the is function will become opposite. now ax if I take, देखो g sin theta, it is supporting, इस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहे हैं वाला, वो पुराना वाला में माइनस जी. ओके, एंड ए वाई इज माइनस जी cos theta. मतलब इफ यू सी केयरफुल देयर एंड हियर, ओनली एक्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, वाई डायरेक्शन सेम है, राइट? उसमें टेबल में वाई डायरेक्शन में u sin अल्फा था, माइनस जी cos theta था, राइट? वाई डायरेक्शन सेम है, ओनली इसमें ओनली प्लस आएगा, उधर माइनस आ रहा है, माइनस जी sin theta. ओके, मतलब x direction is only changing. You tell me which variable will change now? Time of flight, maximum height, range. Here y parameters are same. Y parameters are same. H max. So time of flight and maximum height will not change. Same formula. Same formula. Only range will change because of plus wala. Okay. So लिख लो. Therefore, what is the time of flight का formula? And maximum height का formula लिख लो. Time of flight is same, right? Because y direction is not changing. Y direction is not changing. So लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin alpha by, tell me what is the formula? G 2u sin alpha by g cos theta. cos theta. Okay. Say, because y direction का same variables. If you derive the method में same method same ही आएगा. And maximum height का फॉर्मूला is u square sin square alpha by g cos theta. 2g cos theta. So y डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा. नाउ रेंज का फाइंड करेंगे, रेंज का एक्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, प्लस टेढ़ा आ रहा है ना, सो वी हैव टू पुट दैट वन एंड सॉल्व. हो गया कवर्ड. नाउ रेंज का, रेंज का लिखो, वो एक्स डायरेक्शन का यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, ए एक्स इज जी साइन इटा प्लस जी साइन इटा है, राइट? एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin alpha by g cos theta. Yes, sir. And we have to find sx is equal to r range. So we have to use s equal to ut ut minus plus plus half half it square. x direction, x direction, x direction. After Yes, sir, solving, will change. what? Even r max will change. R max will change. Okay. After solving, आपको r वैल्यू लिख रहा हूँ, r इज इक्वल टू लिख लो, यूज इसमें फॉर्मूला बैठ नहीं करने का, बाई g cos square theta into sin 2 alpha minus theta. After solving, you will get like this, plus sin theta. हमारा इंटरेस्ट क्या है? मैक्सिमम रेंज फाइंड करने के लिए. और मैक्सिमम रेंज आने के लिए the sin value should be 1.
So therefore sin 2 theta is equal to 1 बोल तो sin 90 sin pi by 2 can write. So sin cancel. So 2 alpha minus theta is equal to pi by 2. Plus theta by 2. Pi by 4 plus theta by 2. So ये वाला बढ़ेगा. Now if I substitute the value, you will get R max का formula u square by g into 1 minus sin theta. ये फॉर्मूला सबको लर्न करना पड़ेगा. So अभी तक पूछा नहीं है जेई मेंस में ये टॉप टू डाउन वाला पूछा नहीं, बट एक बार वो वाला डाउन टू टॉप वाला पूछा. तो यू कैन सॉल्व राइट लाइक दिस प्रॉब्लम्स में दे कैन गिव एनीथिंग एंगल में यू कैन सॉल्व राइट ये वाला. Yes, sir. यस. कब बेटा? Yeah. Yeah. So they can give any method में you have to solve. ऐसे थ्रो करने से they'll give 37 degrees, this 30 degrees. They'll tell to find time of flight. You're throwing with 20 meters per second. They'll tell to find time of flight, maximum height, range by using equation of motion में solve करने का. Always method follow करो. Time of flight maximum height तो बैठ करो and maximum range का and alpha value is important. चलो इसमें कुछ नहीं है, easy only. So I am writing out formulas. Now छोटा सा वाला है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग ट्रॉली. देखो एक छोटा सा मॉडल है, कुछ नहीं, प्रोजेक्टाइल मशीन डन, कंप्लीट डन. ये वाला मूविंग ट्रॉली वाला एक छोटा सा केस है. देखो सपोज इधे मूविंग ट्रॉली में विथ वेलोसिटी vt, ट्रॉली का वेलोसिटी, आई एम थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, बॉल को थ्रो किया विथ सेम एंगल थीटा, उसका कंपोनेंट निकाल दो u cos theta u sin theta. Can you tell me what is the horizontal velocity here? This is a normal ground wala projectile machine I'm talking about. No wrong. Can you tell me with respect to ground, when the observer is on the ground, उसको कैसा which speed दिखेगा उसको? उसको कौन सा speed दिखेगा? The trolley is moving and the ball का velocity is also u cos theta. So tell me. So you have to use relative velocity. We have to add. Oh, so According u to cos him, theta plus PR. he feel the relative velocity concept. U cos theta plus vt आएगा, plus vt आएगा. Okay. So now in this case, this is a normal, not inclined wala. This is normal projectile motion only. Normal projectile motion only. But before we used to throw it from the ground में. Now here moving trolley में से मैं throw करूँगा. That's why horizontal velocity is getting added. मतलब कौन सा कौन सा will change? Range या time of flight या maximum height? Which will change here? Range. Okay. So if you see, ux is u cos theta plus vt, uy is u sin theta. Since y is same, so time of flight the formula 2u sin theta by g. Maximum height formula same. Range का formula here in oblique projectile motion में ux into t. ux कौन सा है? u cos theta plus vt, दोनों ऐड करना पड़ेगा. And t is the time of flight, 2u sin theta by g. And suppose if they ask range, maximum range find करो बोलो, in this case में simply you differentiate with respect to theta, you will get the answer. So over here, v is the velocity in which the trolley is moving. ट्रॉली का with respect to ground का respect में. So we can't use the formula, no? R equal to 4h cot theta. हाँ वगैरह वगैरह नहीं होगा. दिस ओनली ग्राउंड से थ्रो करने से ओनली सब कुछ होगा, इसमें तो कुछ नहीं, तो डिराइव करना पड़ेगा. आया अब बैठ. खत्म. ऑल टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डन, कंप्लीट डन. आपको क्या है,
वी लेफ्ट विथ रिलेटिव वेलोसिटी का कहानी है. रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में. नॉर्मल 1 डायमेंशन किया ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? VAB मींस VA माइनस VB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो वाला किया. बट नाउ 2 डायमेंशन में करने वाले हैं एंड इसका एप्लीकेशंस करने वाले हैं. एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम. वो एक स्विमर रहेगा, ही वांट टू क्रॉस द रिवर, वो वाला क्वेश्चंस में परेशान करेगा स्कूल में. ये वो समथिंग समथिंग करके करके परेशान कर, थोड़ा डिटेल में लर्न करना पड़ेगा. एंड रेन प्रॉब्लम्स आल्सो दे विल मेक परेशान. रेन प्रॉब्लम्स क्या है? दे विल टेल दैट अम्ब्रेला, बारिश इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कौन सा एंगल में रखने से आपको अम्ब्रेला मतलब यू विल नॉट गेट ड्रेंच्ड, ऐसा पूछेगा. सो कितना एंगल फ्रॉम वर्टिकल से कितना एंगल रखो सो दैट यू विल नॉट गेट वेट फ्रॉम द रेन, ऐसा पूछेगा. सो 2 applications ओनली, दैट 2 applications लर्न किया तो कंप्लीट चैप्टर डन. एंड देयर इज ए वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. पीपल क्या करेगा सम कॉलेज में, दे विल टेक सर्कुलर मोशन सेपरेटली. मतलब आपको मोशन इन ए प्लेन में यू विल गेट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आल्सो, लॉस ऑफ मोशन में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन विल गेट नेक्स्ट चैप्टर में. एंड वर्क फॉर एनर्जी में उसका नेक्स्ट चैप्टर, वर्क फॉर एनर्जी में आपको सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्किल बोल के एक कॉन्सेप्ट आएगा. सो व्हाट दे विल डू जनरली, दिस ऑल सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट्स दे विल टीच इन ए one separate topic. Okay. But what you will do is, when I start kinematics of circular motion, you write in a back side of the book में. Okay, circular motion, or no problem, एक जगह में रहेगा. If all circular motion will be at one place, or normal no problem, in motion plane में भी एक circular motion आएगा उसका. Okay, understood? So इसका हम लोग relative motion करने वाला नेक्स्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट. बट एक क्वेश्चन करो, अभी देखूंगा.